ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ધોરણ 8 હિન્દી પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર. હવે આ એક તમારે યાત્રાવૃત્ત છે, એટલે કે આ પાઠનો પ્રકાર એક યાત્રાવૃત્ત છે અને એના લેખક છે હરેશ ધોલકિયા. હવે આ બાળક મિત્રો પાઠ છે કચ્છ વિશે. કચ્છ એટલે કે આપણા ગુજરાતનો સૌથી મોટામાં મોટો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ આવેલો સૌથી મોટામાં મોટો જિલ્લો, કે જ્યાં ઘણા બધા જોવાલાયક સુંદર મજાના સ્થળો આવેલા છે અને એના વિશે આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે કે ભાઈ અહીંયા ગાડી તેઓ હશે એમ કે કચ્છમાં ફરવા ગયા હશે ને ત્યાંનું સરસ મજાની આપણને વાત કરેલી છે. તો આપણે જોઈએ कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, એટલે કે प्रांत है दर्शनीय. दर्शनीय એટલે કે देखने लायक. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है, એટલે કે દરેકનું પોતાનું એક મહત્વ અને સૌંદર્ય છે. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. अनूठा એટલે કે अनोखा. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, એટલે કે ગુજરાતનો એક વિશિષ્ટ જિલ્લો છે કચ્છ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. रमणीय એટલે કે સુંદર, એટલે કે તે ગુજરાતનો ખૂબ જ સુંદર પ્રદેશ છે. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, એટલે કે યાત્રીઓ માટે કચ્છ એ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं, એટલે કે એનું એમ કે पौराणिक એટલે કે ધાર્મિક અથવા પુરાણો કે સમય કા એનું મહત્ત્વ પણ ઓછું નથી. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं, એટલે કે ઘણા જોવાલાયક સ્થળો છે એની વિવિધતા, વૈવિધ્ય એટલે કે વિવિધતાના કારણે આપણે એને મ્યુઝિયમ કહીએ છીએ. તમને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય कि कच्छ को म्यूज़ियम क्यों कहा जाता है, तो कि अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूज़ियम कहा जाता है. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं. હવે અહીંયા રેગિસ્તાન એટલે કે રેતીલા પ્રદેશ, जहाँ रेत ही रेत दिखाई देती है. रेगिस्तान विषय આપણે કહેવું હોય તો કહી શકીએ कि वहाँ बरसात कम होती है, पानी की बहुत कमी होती है, पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है. आ उपरांत આપણે કહેવું હોય तो એવું પણ કહી શકીએ कि कई जगहों पर रेगिस्तान में भी कई जगहों पर ज़मीन के अंदर से पानी मिलता है, उसे मरु उद्यान भी कहते हैं. और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. આવું આપણે રેગિસ્તાન વિશે કહી શકીએ. देखने को मिलते हैं एक छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, એટલે એક નાનું રણ અને એક મોટું રણ. આપણે કહીએ છીએ કે કચ્છનું નાનું રણ અને મોટું રણ. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, એટલે કે આમાં રેગિસ્તાન છે ખરું પણ એના જેવું કોઈ લક્ષણ દેખાતું નહીં. રેત કहीं नज़र नहीं आती, उसे अनूठा रेगिस्तान है, એટલે કે એરો એક એમ કે अनोखो रेगिस्तान कहवाय. सामखियाणी को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. तो अपन ने पूछा कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो सामखियाणी को कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है. रापर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है. એટલે કે રાપરથી ધોળાવીરા પહોંચીએ એટલે આપણી સંસ્કૃતિ એમ કે મોહેંજો-દડોની યાદ આવી જાય. એમ કે ત્યાંની નગર વ્યવસ્થા પણ એટલી સારી છે. यह स्थान 5000 वर्षों के अवशेषों का अंग है, એટલે કે આ જે સ્થળ છે 5000થી વધારે વર્ષનું છે. इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रहते हैं, એટલે કે આ प्राचीन नगर જે છે એના દર્શનથી જ આપણે ચકિત થઈ જઈએ. हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते है, એટલે કે અમને પ્રાચીનતામાં જ આધુનિકતા એટલે કે નવીનતાના દર્શન થાય છે. सामखियाणी से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, એટલે કે સામખિયાણીથી પશ્ચિમ દિશામાં જઈએ એટલે ભચાઉ નજર આવે. जो बड़ा गांव है जैसे नगर, तो तमने એવું પૂછી શકાય कि कौन सा गांव नगर जैसा है, तो તમે जवाब આપી શકો કે ભચાઉ. वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, એટલે કે ગાંધીધામ એ औद्योगिक એટલે કે ઉદ્યોગો से संबंधित है. स्थायी એટલે કે કાયમી, એટલે કે ત્યાં ગાડી એમ કે
પછી यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है એટલે કે પાકિસ્તાનથી સિંધી લોકો આવી અને ત્યાં વસેલા છે। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं એટલે કે ગાંધીધામ આદિપુર અને ગોપાલપુરી એ ઉદ્યોગોના કારણે વિકસિત થયેલા જોવા મળે છે। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। बंदरगाह એટલે કે समुद्री जहाज़ों को ठहरने का स्थल तो ये एम के बहुत महत्वનું છે। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है એટલે કે કંડલાનો વિકાસ એ અહીંની લોકો માટે એમ કે ખૂબ જ महत्वपूर्ण છે। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन यात्रा जैन यात्राधाम है એટલે કે કંડલાથી દક્ષિણ બાજુ જઈએ તો ભદ્રેશ્વર એ ખૂબ જ એમ કે પ્રાચીન સ્થળ છે। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है એટલે કે 2500 વર્ષ જૂનું એમ કે સંગમરમરથી બનેલું જિનાલય હતું એ એમ કે ખંડિત થયેલું છે પણ એનું પુનર્નિર્માણનું કાર્ય ખૂબ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે। જિનાલય એટલે કે જૈનોનું मंदिर इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है એટલે કે એને આધુનિક બનાવવા। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है એટલે કે જે મુન્દ્રા શહેર છે એ મુન્દ્રા શહેર પણ તહસીલનું એમ કે મુખ્ય કેન્દ્ર છે। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है એટલે કે यहाँ उद्योगों कारण घनी दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पर पहुँचे એટલે કે किनारे की यात्रा એટલે કે तटीय એટલે કે किनारे की यात्रा। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है એટલે કે मांडवी बहुत सरस જોવાલાયક એમ કે समुद्रना जहाज़ों ऊभું રહેવાનું स्थान है। बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर राजा के महल पवन चक्कियों तथा समुद्र के कारण अधिक दर्शनीय है। तो मांडवी कया माटे प्रख्यात है तो कि राजा का महल पवन चक्कियों और समुद्र तट माटे दर्शनीय है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। ત્યાં ગાડી કેટલા जिनालय છે એટલે કે જૈનોના મંદિર છે 72। यहाँ ही बिदड़ा गाँव में आंतरराष्ट्रीय अस्पताल है એટલે કે ત્યાં ગાડી એમ કે બધા રાષ્ટ્રોના સંબંધિત હોય એવું મોટું હોસ્પિટલ છે। मांडवी से आगे चलते डुमरा कोठीरा सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है એટલે કે આ બાજુ જૈનોના વધારે છે। नलिया शहर तहसील का केंद्र है એટલે કે નળિયા શહેર છે જે એ તહસીલનું કેન્દ્ર ગણવામાં આવે છે। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है એટલે કે ત્યાં एयरफोर्सનું मुख्य केंद्र છે। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है એટલે કે નળિયાથી 1 ઘંટું આગળ જઈએ એટલે નારાયણ સરોવર એ બહુ प्राचीन पौराणिक અને धार्मिक स्थल છે। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर महादेवનું મંદિર ત્યાં છે जहाँ से रावण गुजरा था और पूरे भारत में यह प्राचीन समय स्थान माना जाता है। वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने लायक होता है। और नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। लखपत बहुत जूनू है। वहाँ गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा पण है। लखपतनी अंदर गुरुद्वारा पण छे। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णा अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है એટલે કે એક સમયમાં બહુ સમૃદ્ધ હતું પણ અત્યારે બહુ જીર્ણા અવસ્થામાં આવી ગયું છે। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है એટલે કે એની બાજુમાં જે આપેલું છે એ એમ કે પાનંદ્રો ખનિજ માટે ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે।
साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है એટલે કે સાથે વિદ્યુત નિર્માણનું પણ કેન્દ્ર છે। લખપત से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर જે દરગાહ કહીએ છીએ ને આપણે એ બાળક મિત્રો मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी से होती है। रास्ते में माता का मढ़ એટલે કે આપણે જે આશાપુરા માતાનું મંદિર કહીએ છીએ ને એ માતા का मढ़, वहाँ नवरात्रि में कई लोग पैदल आते हैं। नखत्राणा आगे नखत्राणा नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वाढाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थल है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते हैं। ही वैभव का परिचय होता है। भुज में क्या लायक जोवालायक स्थलों है तो कि आईना महल, प्रयाग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तलाव, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि दर्शन करने की आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण कर एक सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है એટલે કે ભુજથી उत्तर बाजू જઈએ એટલે ખાવડા ગામ આવે ત્યાં ગાડી કાળો ડુંગર છે। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है એટલે કે ત્યાંથી રણ પ્રદેશ જોવો એક અનોખો અનુભવ છે। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है એટલે કે ત્યાં ગાડી રણોત્સવનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે જે બહુ સુંદર જોવાલાયક હોય છે। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान આપણે सफ़ेद रण कहीए છીએ, मीठाનું પણ रण કહેવામાં આવે છે। को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकारीगरी का परिचय होता है એટલે કે ત્યાં ગાડી એમ કે સૃજન નામની જે સંસ્થા છે ત્યાં ગાડી એમ કે કચ્છ બાજુના કચ્છી ભરત છે, ભુજનું ચાંદી છે, એ બધાનો પરિચય થાય છે। જેસલ तोरण की समाधि में मंदिर बनाया है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है એટલે કે सूरजबारी पुलथी तेनी यात्रा पूर्ण थाय जो अस्मरणीय स्मृतिओ छोड़ जाती है એટલે કે બધી આપણે ભૂલી ના શકીએ એવી યાદો એમ કે છોડી જાય છે। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। કહેવામાં આવે છે કે કચ્છ ના જોયું અને કશું જ ના જોયું। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है એટલે કે દરેક મૌસમમાં એને જોવું એમ કે આપણા માટે એક લાવો છે। તો આ પાઠ બાળક મિત્રો આપણે જોઈ ગયા અને એની પાછળ આપણે જે આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આપ્યો છે એ પણ આપણે સમજી ગયા છીએ। બાય બાય।